Good evening, everyone. As you all know, that the COVID is back again in China, and because of the return of COVID, the government agencies are in trouble. They are again holding meetings, they are again getting themselves prepared for this COVID-related protocols to be followed. So then, COVID BF.7, this is the new variant of Omicron. Omicron, you know about Omicron from South Africa. South Africa में it created a lot of turmoil, it created a lot of disaster. ठीक है? So then अभी हम थोड़ा सा prepared हैं because we have vaccinated 220. We have given 220 millions of vaccines actually. Millions of vaccines. तो यहाँ पर क्या है, इंडिया की 74% population according to the data of MOHFW, Ministry of Health and Family Welfare. यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया की 68% population have got 2 times doses of both of the doses, and 74% of the population at least have got 1 dose, right? So as you can see, Corona is back in China, and in this case, Omicron BF.7 has been seen. And यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में, उड़ीसा में, we got a case in September. We got a case in September, and then गुजरात में नवंबर में ये केस सामने आता है. We did not take it seriously back then, but अभी कोविड का because strains आ रहे हैं, म्यूटेशन लगातार हो रहा है, और उस म्यूटेशन की वजह से हमें उसकी जो मास टेस्टिंग है, मास टेस्टिंग से फायदा तो हो रहा है, बट वी आर नॉट सीरियस बिकॉज 2 या 3 केसेस मिलने से कोई सीरियस नहीं होता है. देन इट स्टार्टेड सर्जिंग इन चाइना एंड द केसेस सर्ज लाइक एनीथिंग, राइट? और इसकी वजह से चाइना इज गोइंग टू फॉलो द जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी. एंड जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी में क्या होगा? चाइना विल अगेन गो फॉर लॉकडाउन, China will again go for mass testing, and the COVID protocols will be followed. अभी क्या है? Chinese population is protesting against this zero tolerance policy of China. Because of this zero tolerance, क्या होता है कि इस population को बहुत बंद कर रहना पड़ता है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसके freedom rights को कर्ब किया जाए. And freedom rights को कर्ब करने की वजह से they are protesting against the zero COVID tolerance policy. The parent subvariant BA.5 accounted for 2.5% of the all samples sequenced. So this came to the cognizance of the government, the genome sequencing of BA.5 in India in November, according to the data from the country's SARS-CoV-2 genome sequencing consortium, which is also called INSACOG. So Omicron has been a variant of concern for people in South Africa because इसका बहुत contagious ये हो गया था variant, and there are subvariants as well. The BF.7 subvariant is sublineage of the Omicron variant BA.5. It has a shorter incubation period. Incubation period means it will show up the symptoms very soon. The shorter incubation period का मतलब होता है कि बहुत जल्दी आपको symptoms देखने को मिलेंगे. And the greater transmissibility, it is highly contagious, even more contagious than the original Omicron, right? And the COVID-19, COVID-20. And it has a tendency, it has the ability to infect a lot of masses, a large number of people. It has the tendency to mutate very fast. तो mutation लगातार हो रहा है, variants में लगातार mutation हो रहा है. एंड आप ये वेरिएंट कहां पर स्प्रेडिंग हो रही है? इसकी ईस्टर्न मार्जिन पर जो कंट्रीज पाई जाती हैं, चाइना, जापान, कोरिया, द यूएस एंड द अदर कंट्रीज. चाइना में द केसेस आर सर्जिंग लाइक एनीथिंग. सो इफ वी गो फॉरवर्ड टू द सिम्टम्स पार्ट, so there are these many symptoms. If you have caught COVID Omicron BF.7 version, BF.7 variant, you will face severe dehydration, and
then you will feel the body ache, body pain, fever, cough and sneezing. These are the common COVID symptoms जो again आपको परेशान करेंगे. Why is the variant creating havoc in China? What is the problem? Variant China में havoc क्यों create कर रहा है? Because it's like surging like anything. अगर आप देखें यहाँ पर तो मार्च 2022 में हमें एक सर्ज देखने को मिलता है. Then in December 20 there was a surge. Like it is hugely contagious disease. Protest क्यों हो रहा है? मैंने already आपको बताया कि protest इसलिए हो रहा है because people they have wasted a lot of time in their homes. उन्होंने बहुत सारा business activities, economic activities, they are facing stagflation over there. Economic activities are like they are totally banned. China पूरी तरह से पूरा लॉकडाउन में चला जाता है. It goes to the total lockdown phase, mass testing, right? तो इसके अगेंस्ट लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज लोग नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी फ्रीडम कर्ब हो, वो एक बार फिर से इकोनॉमिक टर्मोइल फेस करें, वो एक बार फिर से उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी बंद करनी पड़े. बिकॉज थिंग्स वर बिकमिंग नॉर्मल, नॉर्मेलिटी का स्टेट अचीव करने से पहले ही कोविड इज अगेन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. So these are some signboards. These are some, like you can see that China's zero tolerance policy. I have told you the meaning. Chinese vaccine showed low efficacy of about 54%, and with the origin of different variants of concern, the efficacy may have gone down. जो लगातार म्यूटेशन हो रहा है उस म्यूटेशन के लिए Chinese vaccines are not apt enough. They are not उनकी efficacious enough. So why in India there is less worry for BF.7? Because we have already done with the vaccination drive, already 74% of the population को vaccines हम लगा चुके हैं, and 68% of the population have got dual doses, दोनों doses मिल चुकी हैं. So we are in a less worried situation. But again, the Prime Minister of India recently, कल ही उन्होंने बोला कि we cannot be in a complacent mode. उन्होंने मिनिस्ट्रीज को, सेक्रेटरीज को, सारे सेक्रेटरीज को रिपोर्ट करने को बोला, मीटिंग्स करने को बोला, जिससे कि हम कंप्लेसेंट मोड से बाहर निकलें, कंप्लेसेंसी में ना जाएं. So more than 220 crore vaccination doses have been administered. Many Indians developed hybrid immunity or super immunity because of these vaccines. What are the directions of Union Health Minister? So currently the Union Health Minister is Mansukh Mandviya. उन्होंने कुछ directions दिए हैं. People should follow COVID appropriate behavior. Again, the mask will become a new normal. जिससे हम इतने सालों बाद पीछा छुड़ा पाए थे. The mask will become the new normal, and the officials to fully gear up and strengthen surveillance. Strengthening surveillance means like airports में जहाँ पर ट्रेड होता है, पोर्ट्स में जहाँ पर भी ट्रैवलिंग हो रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं, ह्यूज क्राउड इकट्ठा हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर सर्विलांस की जरूरत है. बिकॉज वी कैन नॉट गो थ्रू द सेम सिचुएशन. आवर इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन द डाउन फेज. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर. वी आर फेसिंग स्टैगफ्लेशन, एंड दिस कोविड अपकमिंग विल मेक इट even worse. The random testing of international passengers on arrival will start again. We should keep an eye on any emerging variant. अगर further mutation होता है, we should fully gear up and strengthen surveillance. So this was it for COVID. If you have any other queries, आप comment box पर जरूर लिखा करिए, and we'll come up with more videos. जैसे ये topic develop होगा COVID पर और हमें खबरें मिलती हैं, we'll come up with new videos. Thank you so much.